IIM K BMS AT, which is the entrance exam for BMS program at IIM Kozhikode, is going to be conducted on 22nd of June 2025. We are coming up with a crash course wherein we will be covering the whole syllabus that is going to be asked in the exam. This crash course is going to have 30 sessions and each session will be delivered to you on this YouTube channel itself daily at 9 pm. After this crash course is done, we will be providing you with the workshops that will definitely help you train for the exam. As of now, we know that the exam is going to have only QA section and VA section. There is no LR section asked in the exam. But the paper pattern of the exam is not known. As soon as we come to know about the paper pattern, we will definitely deliver 3 to 5 mock tests to you guys as well. So make sure that you subscribe to this channel and inform your friends that this course has started and they can benefit from it. And now let us start learning. Hey guys, welcome to yet another grammar class. Today we are going to take a look at the topic subject verb agreement and tenses. Now we know that in grammar there are some types of questions that are more repeated than the other types. For example, uh, errors with nouns, subject verb disagreement, disagreement in tenses, or some errors in tenses, so on and so forth. Okay, the rest are there, but these are the major categories where you can mostly find error. Okay, so let's begin with this particular topic. Please make very good notes for this particular topic and make sure that you are working hard for this particular type of error detection. So let's get started. These are the types of tenses that we all are pretty much aware of. Present tense talks about the present context. Past tense talks about what has happened in past. And future tense talks about what could be happening in future. Right? So there's not anything very new that I can tell you here. But the point of this section or discussion of this particular section is to make you aware of some tenses which are more or less confusing for majority people. Okay, there are some grammatical rules which may seem odd to us because in our regular use of language we tend to basically speak in a very different manner. So here we have to work with this in order to understand what all is allowed and what is not allowed. Okay, so you may have a statement in front of you in the examination where you think something is wrong, but by rules of grammar that could be correct. So such rules are to be discussed in today's class. So let's take a look at some commonly confused tenses and let's talk about what all usages are. All right. Okay, so let's take a look at simple present tense first. And whatever applies to present tense, similar things can apply to future tense and past tense as well. So the idea will remain the same, aside from some particular precautions in perfect tense and perfect continuous tense, we shall be sorted once we understand what is the meaning of simple tense. Okay, it can be past or present or anything. Okay, but it has to be simple. All right. Now, habitual actions, verifiable truths, or universal scientific facts. So when we talk about simple present tense, we are talking about habitual actions, truths that can be verified, or universal scientific facts. Habitual actions could also have some indication of a continued action which could last into future. Okay. For example, I go for a run every morning. So it means what? It has indication talking about pasts. It has indication talking about futures as well, future tense as well,
right? But are we going to use past tense or future tense? No. Why? Because in simple present tense, there is a possibility that we can use it in these manners: habitual actions, verifiable truths, or universal scientific facts. And obviously, to describe whatever is happening right now. Okay. So the obvious usage is not going to be discussed all that much. What we are going to look at is basically places where we are going to make mistake. So examples, I go for a run every morning. Go is a simple present tense, right? When we talk about going, it is just in V1 form. Now there are V1, V2 and V3 forms, right? Eat, ate and eaten. So EN form, right? Written, eaten, these forms are called V3 forms. They can also be just a repetition of V2 forms, right? So run, ran, ran. So please go through the list of common verbs and their V1, V2 and V3 forms in case you are not very proficient in that. So for simple tense, we always use V1 form, right? So go is V1 form of go, V1 form of go, the verb go. V2 form is went and V3 form is gone, right? So this is the idea. So I go for a run every morning. He takes salsa classes every weekend. So here he takes salsa classes every weekend. So this is basically something that has been happening in the past, is continuing and will continue in future. So this is something like a habitual action. So this usage is all right. Next, a planned future action or a series of such planned actions. A planned future action or a series of such planned actions, which means that you are talking about a future action, but you are using simple present tense to talk about it. Okay, you may use future tense, but if you see this kind of a construction, then it is right. You don't have to change it to future tense. Okay, first we leave Hyderabad at 8:30 p.m. next Tuesday and arrive in New Delhi at 11 a.m. on Thursday. So we leave Hyderabad. They are not saying we will be leaving. They are saying we leave Hyderabad at 8:30 p.m. next Tuesday and arrive in New Delhi at so time on Thursday. So it all feels like they're talking in present tense or simple present tense, and this usage is absolutely allowed. Okay. Next, present continuous tense. Action in progress at the time of speaking, right? Because it is a continuous tense, so something is happening while you're speaking. Okay, it is continuing while you're speaking about it. Okay, so it indicates action in progress at the time of speaking. The baker is baking new cakes. So basically, you're looking at the baker and the baker is baking the new cakes. Next, action will be continued but isn't ongoing at the time of speaking. So there's maybe a temporary break. Okay, temporary break in an action that is probably supposed to last quite long, right? For example, अगर कहीं कोई construction चल रहा है building का, okay, there's a construction going on for a building. So you can say they are building a new skyscraper here. They are building a new skyscraper here, and suppose you're speaking about it, say at night time when none of the workers are working. Okay, then will you say that it is still in present continuous tense? Yes. Why? Because the longer term of action necessitates break, and therefore whenever there are some breaks, since this action is still ongoing, has not finished, you have to use present continuous tense. Okay. Example, the students are protesting against discrimination by college authorities. Okay, now you could be looking at the students who are protesting against discrimination, or you could be speaking about, say, a protest going on somewhere in general, and say the protest is going to stretch. Okay, so maybe it is happening since 7-8 days and it is supposed to stretch a little bit more. So you can say the students are protesting against discrimination by college authority. Next, action arranged to take place in near future. If you talk about action that is supposed to take place in near future,
Then also you can use present continuous tense. For example, I am meeting my school friends for lunch tomorrow. Near future, this is the key. Okay, it has to be near future. You can't say I am going to Spain after 2 years. Okay, so if you are using it in informal communication, that's fine, but 2 years cannot be considered near future. Also, there will be some gray areas when you're talking about grammar, even if there are rules. So it depends probably on the time scale. If you're looking at the time scale of your entire life, then maybe 2 years will not be that bad, like, in terms of time duration. But if you're talking about, say, 4 years, so 2 years can't be considered near future, right? So you have to take a judgment call. Usually you'll not be given such kind of instances where you are getting very confused or where application of rule is very, very difficult. Okay, usually all you need to do is take a look at the statement and try to think of what's wrong with the statement. You can only think properly if you know these rules that we are discussing right now. So, action arranged to take place in near future. For example, I'm meeting my school friends for lunch tomorrow. So tomorrow is a very short duration of time, right? कल तक बहुत छोटा duration निकलने वाला है. So that is a near future kind of scenario. So I'm meeting my school friends for lunch tomorrow is fine. There are a number of verbs which are not normally used in the present continuous tense. Number of verbs which are not normally used in the present continuous tense. Please make a list of these verbs. These are verbs of perception, hear, smell, notice, right? These are not used in continuous tense. So you can't say seeing. What is the idea behind continuous tense? Is or are plus V ka ing form, VING, right? This is the marker of present continuous tense. ऐसे ही अगर past continuous देखा तो was, were or any other indicators of past plus VING. और future का देखा तो will, right? Plus VING. So this is future continuous tense. This is present continuous tense. And this is past continuous tense. It's very easy to understand. So wherever you see VING with is, are, was, were, these are continuous tenses. Okay. Now, so here you can't use ing form of these words. Okay. Verbs used to express feelings or states of mind. For example, want, desire, wish, refuse, forgive, care, hate, like, admire, love. Okay, so the famous tagline, I am loving it, is basically not correct. Okay, I am loving it is not correct. Plus, see, let's take a look at the word want. And if you add wanting, if you add ing to the word and make it wanting, what does it mean? When we talk about want is something that you want for yourself, right? कुछ चाहिए आपको. Okay. अगर आप कहोगे wanting, it is a whole another word which means lacking in. So I can say, though he has a lot of bravery, he is wanting in mental stability. So उसका मतलब क्या, is lacking in mental stability. Okay. अब अगर आप थोड़ा सा देखो तो इसका मतलब वही है कि उसके पास उस चीज की जरूरत है, लेकिन आफ्टर एडिंग ing you're talking about something that is lacking, whereas यहाँ पे you're talking about something that you want. ठीक है, it may or may not be lacking. You may want a car, you may want a home. Okay, but usually when you talk about wanting, you talk about lacking of some quality. So there are a lot of words in this particular category where if you add ing, the entire word is like changing to a different word altogether, or at least a word that is used in very different context altogether. Next, verbs involving the process of thinking: feel, know, mean, remember, forget, recall. These kind of words also you cannot use in present continuous tense. Next, verbs denoting possession: have, own, belong, possess, contain, consist, keep, seem, cost. Okay, so
These are the words that you will typically not use in present continuous tense. अभी have का भी अगर हम देखें तो having. Okay, I have a lot of coffee at home. I'm having a lot of coffee at home. How are these statements different? I have a lot of coffee at home. I am having a lot of coffee at home. Okay, I am having a lot of coffee at home and I have a lot of coffee at home. It means what? Here you're talking about having coffee powder or something of that sort. Coffee beans, coffee powder. Here you're talking about having the drink coffee. Having मतलब consuming. ठीक है? So I'm having a tea right now. तो उसका मतलब क्या है? मैं चाय पी रही हूँ. I'm consuming it. Usually when you want to talk about your meals, you talk about having it, not eating it. Okay. For example, I'm only having fruits for dinner. You are not going to say I'm only eating. Okay. This is technically, you can say that it is a less polished or less formal version of saying that you are eating something. Having is a more polished and more formal approach of telling people that you're eating something. Okay. Next, if used in present continuous tense, such words can sometimes have a completely different meaning. If used in present continuous tense, such words can have completely different meaning. For example, यहाँ पे देखो, I am seeing my parents after quite long today. Okay, so I am seeing my parents का मतलब क्या है यहाँ पे कि मैं अपने पेरेंट्स को देखने नहीं वाली हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को मिलने वाली हूँ. ठीक है, after quite long today. So बहुत दिनों के बाद मैं अपने पेरेंट्स से मिलने वाली हूँ. तो seeing with an ing talks about meeting, not actually seeing. Now let's take a look at the other type, the perfect tense. Okay, so if we just talk about perfect tense, what is the use of perfect tense? Perfect tense talks about something that has happened and has correlation with something else. Usually that is how you're going to basically talk about perfect tense, or an action that is expected to be just completed. Just completed as in एकदम recently अगर कुछ complete हो रहा है तो हम इसको कहेंगे perfect tense. अब इसके साथ आप past, present और future कुछ भी use कर सकते हैं. Okay, so let's see. Used to indicate an action that has just been completed, तो ये हो गया present tense. ठीक है, perfect present tense कि कोई action just खत्म हुई है. Okay, the concert has just ended. Concert has just ended. तो ये हो गया just आपने कोई चीज देखी है या just कुछ खत्म हुआ है तो वो. ठीक है, next, the present perfect tense is also used to represent a past action continuing to present. तो कोई एक past में कोई action हुआ है, उसका कोई impact पड़ रहा है अभी, या कोई एक past action है जो continue हो रही है present तक. ठीक है, this shop has remained open. ठीक है, this shop has remained open since something. So that is one idea. Okay, since say 1998. This shop has remained open for a long time. That is also possible. This shop has remained open for a long time, or this shop has remained open since 1998. Now there is a warning. Do not use perfect present tense when the time is specified, except when you use it with since. So there is an exception. So please make a note of this. ठीक है, ये exception है. तो अगर आप since यूज कर रहे हो तो ही आप कोई एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात कर सकते हैं along with perfect tense. अभी perfect tense के मार्कर्स क्या होते हैं? You'll have a has or a have or a had, okay, plus been plus V2 या V3 depending on what the verb is. तो अगर वर्ब में हमारे पास ऑप्शन है V3 का तो हम V3 यूज करेंगे, नहीं है तो बिकॉज कुछ वर्ब्स का फॉर्म ही, या रादर वी कैन से कि यहाँ पे V2 नहीं V3 ही बोल देता है.
otherwise it can be confusing for some people. Yeah, so this is the form. Has, have, had के साथ आप यूज करोगे बीन या कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब का V3 फॉर्म, ओके, एंड वर्ब का V3 फॉर्म. तो जब आपको हैज, हैव, हैड दिख गया तो परफेक्ट टेंस आएगा. ठीक है, मोस्ट लाइकली अगर स्पेशली अगर वो बीन के साथ दिख रहा है या फिर ऐसे किसी रेलेवेंट वर्ड के साथ दिख रहा है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं. आई हैव सीन दिस फिल्म लास्ट ईयर. ये क्यों गलत होगा? क्योंकि आई हैव सीन दिस फिल्म, फर्स्ट ऑफ ऑल ये या तो कोई एक एक्शन जो जस्ट कंप्लीट हुई है उसके लिए यूज होना चाहिए, या फिर ये कहाँ पे यूज होना चाहिए, जहां पे हम लोग एक पास्ट एक्शन विच इज कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट इसके बारे में बात कर रहे हैं. तो ये जो है, डू नॉट यूज प्रेजेंट टेंस व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड, लास्ट ईयर, 1994 etc. तो दिस इज वायलेटिंग दैट रूल आल्सो एंड इट डजंट मेक a lot of sense. तो इसको आप कैसे करेक्ट करोगे? You are going to use a simple present tense because you watching the film last year does not have any bearing right now. ठीक है? Unless and until you are specifying or using some context like that, you can not go with that particular sentence construction. Okay? You can also say that when you are like, I you can use some other examples to understand this one particularly better. So you can also say that I have been on a tour for I've been on a tour for quite long. ठीक है, I've been on a tour for quite long. इसका मतलब क्या है कि मैं कभी तो निकली थी पास्ट में. I'm still on a tour, so the perfect tense makes sense. Why? Past action continuing to present. Okay. Yeah, I have been to London. Okay, I've been to London. ये आप कह सकते हो. तो आप क्या कह रहे हो कि मैं पहले लंदन गई हूँ. तो वहां पे कहीं अगर आपको कोई पूछ रहे कि हैव यू बीन टू लंदन येट, अभी तक आप कभी लंदन गए हो क्या, तो आप कह सकते हो यस आई हैव बीन टू लंदन वंस. सो मैं एक बार जाके आ चुकी हूँ, राइट? सो यू आर इंडिकेटिंग एन एक्शन that has some past connotation and you are discussing it, and in that reference you are giving the statement, yeah, answer. Next, past perfect tense used when we wish to emphasize the sequence of two actions in the past, when the earlier action has some relation to the later action or situation. So basically वहां पे एक action 1 है and action 2 है. ठीक है, ये just खत्म हुई है और ये just खत्म हो रही है, या ये भी past में already खत्म हो चुकी है लेकिन इसके बाद. ठीक है, so first this action is happening and simultaneously, or you can say while this is ending or while this is about to end, there is some sequence and A2 follows A1. Okay, let's take a look at examples for better understanding. When I reached the amusement park, the tickets had already been sold. यहाँ पे क्या है? Had is for past. ठीक है, has का past tense form. The tickets had already been sold out. अब sold का present है sell, past tense है sold and perfect tense है sold. Okay, V3 is sold only. There's nothing like sold वगैरह. So that is the idea. Okay, तो इनका कहना क्या है कि जब मैं अम्यूजमेंट पार्क पहुंचा तब तक टिकट्स बिक गई थी. तो एक्शन 1 अम्यूजमेंट पार्क पहुंचा तब तक टिकट्स बिक जाने की एक एक्शन कंप्लीट हो गई है. ओके, नेक्स्ट, आई विजिटेड लद्दाख व्हेन स्नोफॉल हैड ऑलरेडी स्टार्टेड. मैं लद्दाख तब गया या गई जब स्नोफॉल ऑलरेडी चालू हो चुका था. सो पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, इन टेंसेस में हमें खास करके कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम लोग चीफली यही टेंसेस पढ़ रहे हैं. अगर हमें कोई भी तरीके का कंफ्यूजन होता है तो प्लीज, अगर आपको कोई मतलब आप अगर बेसिकली टेंसेस आप नहीं समझ पाते हैं या आपको बिल्कुल ही बेसिक नहीं आता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार बेसिक्स पढ़ लीजिए. ठीक है, रीड सम बेसिक्स कि हर एक टेंस कैसे यूज होता है. कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए बिफोर यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ. ये जो डिस्कशन है ये अगर आपको बेसिकली व्हाट इज पास्ट
tense, simple past tense, what is future tense and what is present tense. ये अगर आपको ऑलरेडी पता है और इसके बाद जो वेरिएशन है उसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया है तो ये आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा. बट एज आई सेड, आपको अगर आप पूरा ग्रिड पढ़ने जाएंगे तो आपको तकरीबन 12 टेंसेस पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है. What we have to do is we just have to understand कि simple tense कब यूज होता है. ओके. परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस कब यूज होता है, एंड सिंपल टेंस, परफेक्ट टेंस, हाँ, एंड एक कंटिन्यूअस टेंस बच गया, कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है. ठीक है. तो सिंपल और कंटिन्यूअस कब यूज होता है. देखो, सिंपल जब आप एक कोई सिचुएशन राइट नाउ जो भी हो रहा है उसको डिफाइन कर रहे हो, अदर देन द एक्सेप्शंस दैट वी ऑलरेडी मेंशन. Continuous, something that is continuing while you are discussing, or something that was continuing in case of past tense and that will be continuing in case of future tense. Perfect tense में क्या होता है, as we saw just now, there are some rules for perfect tense. तो जो past perfect के लिए valid है वही future और सॉरी जो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए वैलिड है वही फ्यूचर और पास्ट टेंस के लिए भी वैलिड है. तो अगर आपको जस्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया कि परफेक्ट टेंस का काम है टू टॉक अबाउट एक्शन विच वर जस्ट कंप्लीटेड. अब यहाँ पे हैज है तो ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है. अगर मैं कहूँ कि एक्शन विच वर जस्ट कंप्लीटेड बाय, ये हो सकता है कि कोई एक चीज पहले कंप्लीट जस्ट हुई है और आप अभी उसको नरेट कर रहे हैं. ठीक है. तो ये आपकी पास्ट टेंस में हुई है कंप्लीट, लेकिन आप उसको अभी नरेट कर रहे हैं. तो एक्शंस विच वर जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है, when you were in that situation and now you are narrating it, so that is past perfect. okay. and जो फ्यूचर परफेक्ट है वहां पे आप एक प्रिडिक्शन दे रहे हो कि जब मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी तो ऐसा हो चुका होगा. ओके. जैसे अगर ये एग्जांपल देखें, आप ये कह सकते हो आई विल विजिट लद्दाख व्हेन द स्नोफॉल वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. ठीक है. द स्नोफॉल वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. या आई वुड विजिट लद्दाख, यू आर प्रिडिक्टिंग कि मैं लद्दाख उस टाइम पे जाऊंगी जब स्नोफॉल ऑलरेडी चालू हो चुका होगा इन फ्यूचर टेंस. ओके. जहां पे भी हैड, हैव और इसके वेरिएशंस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के वेरिएशंस और प्लस V3 फॉर्म, ये जहां पे दिखता है ये होता है परफेक्ट टेंस. ठीक है. हैज, हैव, वेरिएशंस ऑफ दिस. अब ये रह गया है फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी परफेक्ट टेंस, जस्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रादर, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये कब यूज होता है, जब हम कोई एक चीज पहले शुरू कर चुके हैं और वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू होने वाली है. ठीक है. यही कॉन्टेक्स्ट में वो यूज होगा. समथिंग दैट लाइक यू नो पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट, यहाँ पे ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेकिन अगर आपको अभी प्रेजेंट में उसकी कंटिन्यूटी दिखानी है तो आप ING फॉर्म यूज करेंगे. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि समथिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट नाउ स्टार्टेड इन द पास्ट has come till present. ठीक है. and will continue into future. ठीक है. तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कैसे? दिस ईयर, नहीं, लेट्स टॉक अबाउट अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. आई हैव बीन गोइंग. ठीक है. आई हैव बीन गोइंग, ING form. I have been going to that temple since so and so time. ठीक है. since से 1993. I have been going to that temple since 1993. मतलब मैं अभी भी जा रही हूँ, मैं आगे भी जाऊंगी. ओके. या अगर मुझे कहना है इसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कहूंगी, आई हैव बीन कमिंग. ठीक है. या आई हैव कम टू दिस टेम्पल सिंस 1993. विदाउट दी ING आना चाहिए ना, क्योंकि कंटिन्यू ING आ गया तो कंटिन्यूस टेंस. अगर हमको कंटिन्यूस टेंस का रेफरेंस नहीं चाहिए तो हमें ING हटाना पड़ेगा. ओके. सो दिस इज द आइडिया. आई होप कि थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ है. अगर नहीं हुआ है तो प्लीज टेक अ लुक एट द वेरी बेसिक्स ऑफ टेंसेस एंड देन गिव इट अ रीड अगेन. ठीक है. एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करिए. एक एक वर्ड जो आप रूल्स में पढ़ेंगे उसके साथ आपको थोड़ा सा एंगेज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये टेंस का जो सिचुएशन है वो क्लियर होने वाला है. ओके.
अब एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप ये फिर से सेशन देखिए, ये बिट फिर से देखिए, and then try to implement it. Okay, so we are done with tenses now. Let's talk about subject verb agreement. So सबसे पहले तो before we start with the rules for subject verb agreement, we need to understand कि what is a subject, what is a verb. Okay, verb is a part of speech. ठीक है, verb is a part of speech. जब हम कहते हैं subject in a statement, what does it mean? And verb, what it means? Verb is a part of speech which talks about some action. Okay, तो जो भी एक्शन हो रही है उसको हम कहेंगे वर्ब. सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वो है जो ये एक्शन कैरी आउट कर रहा है. सो सब्जेक्ट इज द डूअर. ओके, डूअर ऑफ द एक्शन. एंड इफ वी टॉक अबाउट another part of the statement, object is basically that part of statement who is affected by the action taken, or another object that is mentioned which is related to the action taken but is not the doer. ठीक है, for example, I visit my hometown frequently. I visit my hometown frequently. इसका क्या मतलब है? I visit my hometown frequently. मैं काफी बार अपने hometown जाती हूँ. अब इसमें who is the doer of the action? I. ठीक है, action क्या है? Visiting hometown is the action. So visit, यहाँ पे verb एक ही word में खत्म हो रहा है, visit. So this is verb. Okay. Now what is this? My hometown is the object. क्यों? It is associated with this action but it is not the doer of the action. Okay. And frequently अगर हमें देखना है तो part of speech के हिसाब से frequently will be an adverb. Adverbs are those words which talk about or give information about verbs, adjectives और other adverbs. अगर बेसिक्स आपने अभी तक भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, तो प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एनीथिंग विदाउट यूजिंग सम ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी. ओके, तो अगर आपको ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत क्लियर है तो फिर आप समझ पाएंगे, वरना आपको हर बार कंफ्यूजन होते रहेगा. ओके, तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब हम बोलते हैं तो हमारा कहना ये है कि हमको सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी मैच करनी है ऑफ थर्ड पर्सन. ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. When we talk about subject verb agreement, it's always about third person. ठीक है, of course जो मैं अभी रूल्स बताऊंगी वो थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन they will implement, you can implement them to I and you also, which is first person and second person. ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि जब हम आप और मैं ये बात करते हैं तो यूजुअली हम प्लूरल वर्ब्स यूज करते हैं या प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हैज अ कार, मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी आई हैव अ कार. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लूरल. हैज इज सिंगुलर, हैव इज प्लूरल, तो आई के साथ आप हमेशा हैव ही यूज करते हो. ठीक है, तो आप हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करोगे आई के साथ. यू हैव अ कार, इसके साथ भी आप प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हो. ठीक है, तो यू के लिए भी नहीं. सो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के बारे में हम यूजुअली बात नहीं करते व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ऑफ कोर्स अगर आपने आई हैज अ कार लिखा है तो दिस सब्जेक्ट डज नॉट अग्री विथ दिस ऑक्सिलरी वर्ब, सो यू हैव टू चेंज दिस ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, तो जो मैं रूल्स चीफली आपको बताऊंगी उसको आपको देखना है कि हु इज द सब्जेक्ट. इज द सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड पर्सन? अगर फर्स्ट या सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही आएगा. ठीक है, वर्ब भी प्लूरल आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब भी प्लूरल आएगा. और अगर थर्ड पर्सन में अगर हम बात कर रहे हैं या थर्ड पर्सन की बात हो रही है
तो वर्ब हमेशा डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सिंगुलैरिटी और प्लूरलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन, वर्ब हमेशा उसी सिंगुलैरिटी या प्लूरलिटी को फॉलो करेगा. देखो बहुत सिंपल है. लुक एट द नाउन, लुक एट द वर्ब. ठीक है. नाउन में अभी कहने के लिए हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं, लेकिन इट कुड ऑल्सो मीन ऑब्जेक्ट, इट कुड ऑल्सो मीन सब्जेक्ट. So basically, if you take a look at anything, just take a look at noun or pronoun that you are looking at, that is involved in the sentence, and verb या auxiliary verb जो भी आपको sentence में दिया है. आपको करना क्या है? अगर मैं कहूँ कि he is going to the market, he is going to market, to the market आना चाहिए actually, but let's let it be. अब यहाँ पे क्या है? noun या pronoun he है. Okay, is associated with he. Going verb है, तो इसके बारे में हमें अभी बात नहीं करनी क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में है. तो कंटिन्यूअस फॉर्म में कोई प्लूरलिटी और सिंगुलैरिटी में डिफरेंस नहीं होता. ठीक है. तो बस हमें देखना है कि ही और इज मैच करता है क्या. हाँ, अगर मैं बोलूँ ही आर गोइंग टू मार्केट तो सही होगा क्या? नहीं. ठीक है. क्यों? क्योंकि ही इज सिंगुलर एंड आर इज प्लूरल. सो दैट इज द आइडिया. ओके. तो अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा. अभी अगर मैं कहूँ he go to market, अब अगर हम देखें go, तो go is basically a plural form. अगर हमको इसको सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमको बोलना पड़ेगा goes. So the thing to remember about noun and verbs, ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड प्रोनाउन भी इंक्लूड हो गया. जब हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब भी. सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इज कि नाउन्स में अगर हम एस या ईएस लगाए तो हमें क्या मिलता है? प्लूरल. पर वर्ब्स में अगर हम एस या ईएस लगाए तो हमें मिलता है सिंगुलर. राइट्स, सिंगुलर. she writes a letter every day, she writes, she is singular. अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ they write, I'll say they write, I can't say they writes, है ना. तो they write and she writes, she writes. So the basic thing about subject verb agreement is to understand कि कौन सा नाउन जो भी आपके पास दिया है या प्रोनाउन वो कौन से वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ एसोसिएटेड है. ठीक है. ये आपने कैसे करना है? सबसे पहले तो वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब पहले ही नोटिस कर लो स्टेटमेंट पढ़ते हुए. ठीक है. एंड देन फाइंड आउट कि व्हाट दैट इज एसोसिएटेड विद. उल्टा जाना है. आप नाउन के बेसिस पे ढूंढने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा. तो वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पहले ट्रैक करो और देखो कि वो कौन से नाउन या प्रोनाउन के साथ एसोसिएटेड है. फिर आपको क्या चेक करना है? यू हैव टू चेक द सिंगुलैरिटी और द प्लूरलिटी ऑफ द नाउन या प्रोनाउन कि जो दिया हुआ है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. इसमें आपको नाउन्स के जो रूल्स थे कि कौन से केस में सिंगुलर कंसीडर होता है, कौन से केस में प्लूरल कंसीडर होता है, वो आपको काम में आएगा. ठीक है. तो वो रूल्स एक बार आप रिवाइज कर लीजिए बिफोर यू स्टार्ट विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. एंड वंस यू एस्टैब्लिश दिस यू हैव टू टेस्ट कि जो आपको ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब जो दिए हुए हैं वो अगर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो सिंगुलर है कि नहीं, और अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो प्लूरल है कि नहीं. अगर आपने इतना पता लगा लिया तो आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा. आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. हमें ध्यान कब देना है? जब मल्टीपल कॉमास वाले सेंटेंसेस आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ का रेफरेंस यहाँ पे आए. ठीक है. यहाँ का रेफरेंस यहीं पे खत्म हो जाए. यहाँ पे कोई एक वर्ड आए लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा लग सकता है कि ये वर्ब थोड़ा गलत लग रहा है. क्यों? क्योंकि इसके वजह से, क्योंकि पास में अगर दो अलग अलग सिंगुलैरिटी या प्लूरलिटी वाले वर्ड्स हैं तो हमें लग सकता है कि गलत है. लेकिन आपको देखना है कि व्हाट इज इट एसोसिएटेड विद. ओके. तो अभी जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी बिट very properly. Your understanding has to be rock solid, otherwise you will face a lot of problems understanding this particular type of question. Okay. तो subject verb agreement को इस तरीके से हमको solve करना है. That is the strategy. So let's get started with the rules of subject verb agreement. First, when two subjects are joined by and, the verb is plural. तो अगर
I'm talking about Ram and Rahim. Ram and Rahim like to cook. यहाँ पे क्या आया? Like. अब like means what? Like is a plural subject. इसका singular form क्या है? Likes. क्योंकि हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, राम और रहीम दोनों को पसंद है, राइट, कुकिंग. तो अभी क्या होने वाला है यहाँ पे? अगर एंड आया तो इट विल बी प्लूरल सब्जेक्ट, एंड और आया तो इट विल बी सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, क्योंकि और जब हम कहते हैं वी कैन से कि राम और रहीम कुक्स एवरी डे. ठीक है, इधर राम और रहीम कुक्स एवरी डे. ठीक है, तो इधर और इज डिफरेंट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. तो वी कैन से राम और रहीम कुक्स एवरी डे. ठीक है, राम और रहीम कुक्स एवरी डे. तो बेसिकली मान लो कि दोनों साथ में रहते हैं, तो या तो राम बनाता है खाना या तो रहीम बनाता है. ठीक है, तो द क्वेश्चन इज हाउ आर वी गोइंग टू टैकल इन केस ऑफ एंड. इन केस ऑफ एंड वर्ब हैज टू बी प्लूरल. इन केस ऑफ और वर्ब हैज टू बी singular. Rule 2. When two singular nouns joined by and refer to the same person or thing, the verb is singular. तो अगर एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है तो वर्ब आएगा ऑब्वियसली सिंगुलर, क्योंकि एक ही इंसान है. ठीक है, सो देखो यहाँ पे कैसे लिखा जाता है ऐसा स्टेटमेंट. द प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ दिस कॉन्ग्लोमरेट इज नोन टू बी अ पावरफुल वुमन. देयर इज ऑल्सो एन इशू विथ आर्टिकल्स हियर. ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. So article the, if you're using it just once, the president and CEO, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही है. There's only one person who's the president as well as the CEO. However, if you add one more the, like in this case, then it will be plural. Why? Here, by adding two articles, you are indicating that these are two different entities and they are joined by and. तो इसका मतलब है कि हम दो entities के बारे में बात कर रहे हैं. Okay? Next, if two different singular nouns express one idea such as a single meal, dress, location, etc., the verb is in singular form. If the idea expressed is singular, because then in that case it is becoming singular subject. ठीक है, क्योंकि ये आइडिया जो एंड से आप जोड़ के बात कर रहे हो, लेकिन अगर उसका एक वो कॉन्सेप्ट है, इट इज वन कॉन्सेप्ट, वन आइडिया, then it becomes a singular subject, and that's why verb should be singular. Dal and rice is the ultimate comfort food for me. Okay, अभी अगर मैं कहूँ dal and rice is the ultimate comfort food for me, I am talking about the dish dal and rice. It's almost like I'm saying dal rice is my favorite meal. But अगर मैं dal and rice भी बोलूँ and I'm talking about a meal, one meal, तो because it represents a dish, one single dish, it becomes singular, and therefore the auxiliary verb being used is singular. My bread and butter is my speaking skill. Bread and butter का मतलब क्या है? Bread and butter means livelihood. My bread and butter is my speaking skill. तो मेरा जो livelihood है वो है speaking skill. Okay? Eggs and bacon is a healthy breakfast. ठीक है, eggs and bacon, because eggs and bacon traditionally universally represent you can say western one of the western dishes. They are eaten together as breakfast. So ये common idea है कि eggs and bacon is a breakfast. Okay, so eggs and bacon is my favorite breakfast. तो भले ही मैं वहाँ पे and use कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि noun one and noun two together represent one single idea, therefore they are considered singular, because it's just one idea, and therefore the verb has to be singular. Next rule, when two singular subjects are practically synonymous in effect or with respect to the context, the verb should be in singular form. It is similar to this rule. Okay, तो जब दो singular subject use करे जा रहे हैं and they are synonymous in context or in effect, then it is again counted as a single idea. Okay, example, power and position has no place in spiritual realm.
तो यहाँ पे पावर एंड पोजीशन दोनों सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो राइट, तो it becomes a singular subject. Beauty and youth does not by default dictate admiration. ठीक है, तो यहाँ पे भी सिमिलर आइडिया, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, तो it is becoming a singular subject. Rule 5, when two singular subjects are preceded by each and every, the verb is singular. क्या हो रहा है, two singular subjects combined by and are preceded by each and every. preceded यानी पहले आ रहा है, तो एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल ईच, ठीक है, प्रीसीडेड कौन से, ये कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्रीसीड हो रहा है, ईच से, बॉय एंड गर्ल, राइट. सो बॉय एंड गर्ल आया है, फिर भी क्या होने वाला है, इट इज टू बी कंसिडर्ड सिंगुलर. ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैं कहूँ ईच बॉय एंड गर्ल हैज टू वेयर स्पेसिफिक ब्लेजर मेड फॉर द इंडियन टीम, इसका मतलब क्या है, हर एक बॉय एंड हर एक गर्ल हैज टू वेयर स्पेसिफिक ब्लेजर. ओके, so this means we are talking about every individual and therefore we are considering it as singular subject. In effect कैसे होगा, हम हर एक बंदे और हर एक बंदी के लिए रेफर कर रहे हैं. Every man and woman wishes to be rich, famous and powerful. Every man and woman wishes to be rich, famous and powerful. तो हर एक आदमी और औरत चाहते हैं कि वो rich, famous and powerful बने. So because we are talking about every individual and individual is singular, therefore the subject is singular and therefore the verb has to be singular. So this is the idea यहाँ पे, ठीक है. Now moving on, rule 6, when the subjects joined by either or neither nor are of different persons, the verb will agree in person and number to the with the noun nearest to it. ठीक है. Also the plural subject must be placed near the verb, nearest to verb. ठीक है, तो मतलब कैसे है कि अगर सिंगुलर है तो आप सिंगुलर कैसे भी अरेंज कर लीजिए, ठीक है, और इधर और नीदर नॉर है तो हमेशा दो लोगों के बारे में बात होगी, राइट. इट विल बी अबाउट बोथ और टू पीपल और टू एंटिटीज. सो इधर और नीदर नॉर के केस में दैट इज द सिनेरियो. तो क्या होने वाला है कि अगर आपके पास प्लूरल्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नाउन्स, तो यू हैव टू प्लेस प्लूरल्स नियरेस्ट टू द वर्ब. ये सबसे पहले हमको याद रखना है. और दूसरी बात, when we are talking about plurals we also have to consider कि जो प्लूरल मतलब अगर प्लूरल सिंगुलर ऐसे मिक्स नाउन्स है हमारे उस सेम सेंटेंस में, तो इसके साथ अग्री करेगा वर्ब. बाय रूल तो हमको इसको पास में ही रखना है वर्ब के. बट अगर मान लो सिंगुलर है एंड आए है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब में एम. यूजुअली ये अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, आए हम पहले लिखेंगे ऐसे केस में, ये ऑकवर्ड होता है, इसलिए रूल बाय रूल नहीं, ये ऑकवर्ड लगेगा, इसलिए आए then whatever singular verb you want to write. So either I or my brother, and नहीं आएगा, sorry, I or my brother will go. ठीक है, और इधर I or my brother is attending. ठीक है, तो I am आना चाहिए और brother is आना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे क्लैश क्या है, is लिखे या am लिखे, तो जो वर्ब के पास है वो लिखना है. अगर मैंने स्विच कर दिया either my brother or I, उसके बाद क्या लिखूंगी मैं, am attending this event. ठीक है, या will attend this event. अगर will यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस में बात करनी है तो फिर am ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए अगर I पास में है वर्ब के. तो लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जांपल्स. नीदर अजय नॉर विजय इज हैंडसम. ठीक है, नीदर अजय नॉर विजय इज हैंडसम. अब नीदर नॉर इधर और बेसिकली और का ही फॉर्मेट है, ठीक है, इसीलिए वहां पे सिंगुलर कंसिडर होगा. इधर माई सिस्टर और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ठीक है, अगर इसको रिवर्स कर देंगे, इधर आई और माई सिस्टर, फिर आएगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. नीदर द राइटर नॉर द जर्नलिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस. अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर था, यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगुलर एंड प्लूरल. सो प्लूरल by default are kept nearest to the verb and auxiliary verb has to match as well. ठीक है, so neither the writer nor the journalist, plural journalists, are responsible for this mess.
तो बाय रूल यू कांट स्विच द पोजिशंस ऑफ दीज टू. अगर दोनों प्लूरल है तो दोनों केसेस में हमें कोई इशू नहीं होने वाला, अगर दोनों प्लूरल है तो. लेकिन मिक्स है तो हमको ये रूल याद रखना है. नेक्स्ट, rule number 7. If we use connectives like together with as well as accompanied by to combine two subjects, the verb agrees with subject mentioned first. ठीक है. If we use connectives like together with as well as accompanied by to combine two subjects, the verb agrees with the subject mentioned first. कौन से कनेक्टिव्स? इधर और नीदर नॉर नहीं, क्योंकि उसमें हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे, हम सेग्रीगेट कर रहे हैं दो इंडिविजुअल्स को. ठीक है. लेकिन यहाँ पे टुगेदर विथ यानी के साथ, एज वेल एज, ठीक है, वो भी, accompanied by, again will somebody is giving company, तो in that case verb has to agree with subject mentioned first. अब ये क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि I will be accompanied by my mother, तो यहाँ पे क्या है कि most likely I am the one who's invited and my mother is accompanying me. ओके. आई विल अकम्पनी माई मदर, ये एक अलग आइडिया है. लेकिन अगर मैं कहूँ आई विल बी अकम्पनीड बाय माई मदर, तो इसमें अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंस इज विथ आई. ठीक है. तो इफ यू हैव टू combine it like that and use a verb along with it, we have to consider the noun that is given first, that is called main noun. ठीक है. For example, the chief minister of Maharashtra together with her daughters is visiting the aero show. Who's more important here? The chief minister is more important, right? Even if the sentence does not talk about this, ठीक है, even if the sentence does not talk about this, जब आप second noun use कर रहे हैं in connectives के साथ में, तो by default first noun becomes more important, okay, and therefore we have this rule. So you have to follow more importance किसको है उस हिसाब से, या फिर you can simply remember the rule together with as well as accompanied by so on and so forth. Rule number 8. When not only but also is used to combine two subjects, the verb agrees with the subject close to it. तो verb के पास जो subject है उसके साथ हमको agreement दिखाना है. तो not only Ravish but also his brothers. So not only but also, ठीक है, his brothers. This is plural. This is singular. His brother के साथ क्या match करना है? are. ठीक है. Auxiliary verb has to agree with his brother because it is plural, nearest to verb. Okay. Next. Rule number 9. No and none and no can take either singular or plural forms. So it will purely depend on the context. None and no जब हम बोलेंगे तो हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ओके. None of the diners were happy. तो diners, ठीक है, diners is the main subject. Diners as a subject is plural. इसीलिए auxiliary verb हमने were यूज किया है, was नहीं यूज किया है. None of the money found was real. The money basically is considered singular. ठीक है. So was real. तो singular subject आया है तो singular auxiliary verb आ रहा है. No example is enough to make her change her mind. No example is enough. ठीक है. To make her change her mind is, क्यों? क्योंकि example is singular. अगर मुझे आर यूज करना है तो मैं कह सकती हूँ नो एग्जाम्पल्स आर इनफ टू मेक हर चेंज हर माइंड. ओके. नो एग्जाम्पल्स सर्व द करेक्ट पर्पस ऑफ डिटरिंग द क्रिमिनल. नो एग्जाम्पल्स सर्व द करेक्ट पर्पस. तो यहाँ पे नो एग्जाम्पल्स इज प्लूरल एंड वर्ब इज सर्व. सर्व का प्लूरल फॉर्म है सर्व, सिंगुलर फॉर्म है सर्व्स. अगर मैंने वहां पे एग्जाम्पल को एग्जाम्पल्स में से एस हटा दिया और सिंगुलर बना दिया तो इट विल अगेन गो विथ सर्व्स, जैसे ऊपर गया है. ठीक है. इज आया यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म आएगा सर्व्स. अगर मैंने एस हटा दिया तो, और अगर मैंने एस रिटेन किया, अगर मैं कहूँ नो एग्जाम्पल्स, मतलब जितने भी एग्जाम्पल्स दे दो, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंस, कोई डिटरेंट नहीं होने वाला. तो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल एग्जाम्पल्स, माई वर्ब इज ऑल्सो plural. Rule number 10. While using a number of or the number of, we typically use the following two structures.
a number of plural noun plus plural verb. Okay, a number of plural noun plural verb and the number of plural noun singular verb. अब इसमें आर्टिकल्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी काम में आएगी. अ एज एन आर्टिकल इज स्ट्रेंजर. ठीक है, सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द स्ट्रेंजर नंबर. ठीक है, हमको सिर्फ इतना कहना है कि देयर इज अ प्लूरल नंबर, दैट्स इट. ओके, अगर मैं कहूँ द नंबर, तो यहाँ पे आर इंटरेस्ट इज इन द पर्टिकुलर नंबर दैट वी आर स्पीकिंग ऑफ. ओके, तो ये हमारा इंटरेस्ट क्या है कि नंबर क्या है और यहाँ पे कितने. सो हाउ मेनी इज द आइडिया हियर, अ नंबर ऑफ समथिंग, और यहाँ पे द नंबर ऑफ एप्पल्स लेफ्ट आफ्टर द पार्टी वर 7. ठीक है, द नंबर ऑफ एप्पल्स इज 7. द नंबर हैज टू कम, the number has to become the priority of the statement. ठीक है, and therefore the auxiliary verb will agree with that, because we are interested in how many, we are interested in exactly which number is left. और यहाँ पे a number of apples were left. तो यहाँ पे usually जब हम the number बोलते हैं तो we are thinking of one particular number and we are interested in what exactly the number is. एंड अ नंबर जब बोलते हैं तो हमें सिर्फ ये कहना होता है कि काफी सारे. ठीक है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट है मेनी एंड इसका कॉन्टेक्स्ट है पर्टिकुलर नंबर. ओके, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगा. फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स हु हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी इज क्वाइट स्मॉल. नाउ टेक अ लुक एट दिस सेंटेंस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस. अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू फर्स्ट थिंक ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड वर्ब्स. ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं? हैव, इज, वर्ब इज लिविंग. ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे हैव क्यों आया, यहाँ पे हैज क्यों नहीं आया? बिकॉज दिस पर्टेन्स टू साइंटिस्ट्स. ठीक है, तो इनका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बराबर है. द नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स हु हैव बीन लिविंग इन दिस कॉलोनी. सो दिस एंटायर बिट इज टॉकिंग अबाउट specific category of scientists. Okay, so the number of scientists who have been living in this colony, तो यहाँ पे have has to resonate with scientists, not the number. Okay, the number किसके साथ resonate करेगा? is quite small. ठीक है, तो number of scientists is quite small. ठीक है, तो यहाँ पे is has to resonate with the. Next, a number of applications have already been processed. अब इसमें जब वो कह रहे हैं number of applications, so they want to tell you कि many applications have been processed. ठीक है, sort of like many या more than one. ठीक है, multiple, that is the idea here. और यहाँ पे exactly कितने साइंटिस्ट रहते हैं, हमें उस नंबर में इंटरेस्ट है यहाँ पे. that is why it is singular. Rule number 11. When the percentage or part of something is mentioned with plural meaning, the plural verb is used. ठीक है, when the percentage or a part of something is mentioned with plural meaning, the plural verb is used. अगर singular meaning में use किया तो singular verb will be used. ठीक है, तो 30% of Indian women are literate. ठीक है, 30% of Indian women are literate. तो यहाँ पे plural meaning में use किया गया, तो प्लूरल वर्ब आएगा. यहाँ पे 3/4 ऑफ द फूड हैज बीन ईटन. ठीक है, 3/4 ऑफ फूड. फूड को हम हमेशा अनकाउंटेबल कंसीडर करेंगे, राइट? फूड को गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल है तो हम हमेशा सिंगुलर जाएंगे. ठीक है, दैट इज द आइडिया. मटेरियल नाउन हो गया ना फूड, तो यहाँ पे हैज, दैट इज द रीजन. यहाँ पे क्योंकि फूड वी आर रेफरिंग टू एज अ होल, and therefore it has to resonate with, the verb has to resonate with food. यहाँ पे 30% of Indian women are literate, so it has to resonate with women. We are discussing about multiple women यहाँ पे, and we are discussing about part of food, and food is singular. Rule number 12. In sports, while referring to the players, the name of the country is followed by plural verb. ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक होती है कि अगर आप कहेंगे टीम, तो टीम विल बी कंसिडर्ड सिंगुलर. ठीक है, नाउन, क्योंकि जो टीम है ये कलेक्टिव नाउन है. टिपिकली कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स इन दैट पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन. ओके,
अब यहाँ पे जब स्पोर्ट में बात करेंगे तो अगर प्लेयर्स को उन्होंने नेम ऑफ द कंट्री के हिसाब से ये किया है, रेफर किया है, तो इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप. ओके, बट अगर वो इंडिया एज अ होल एज अ कंट्री रेफर करेंगे तो इंडिया हैज वन द वर्ल्ड कप. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट यू आर यूजिंग. ओके, अब ये सेंटेंसेस आपको थोड़े से ऑड लग सकते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस है और एग्जैक्ट आपको मीनिंग नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं. अगर वो प्लेयर्स को रेफर करके बोल रहे हैं तो ये आएगा, लेकिन अगर वो कंट्री को रेफर करके बोल रहे हैं तो हैज आएगा. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस बिकॉज आपको सिर्फ इतना देखना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, अगर आप एरर डिटेक्शन कर रहे हैं, इंडिया हैव वन द वर्ल्ड कप इज इक्वली राइट एंड इंडिया हैज वन द वर्ल्ड कप इज इक्वली राइट. ओके, अगर प्लेयर्स का कॉन्टेक्स्ट आपको पर्टिकुलरली दिखता है तो आपको ये रूल इम्प्लीमेंट करना है. और अगर आपको दिखता है कि प्लेयर्स को रेफर नहीं किया जा रहा है, इंडिया एज अ कंट्री को रेफर किया जा रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप उसको सिंगुलर ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, तो इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. Rule number 13, when the word enemy is used in the sense armed forces of a nation with which one's country is at war, we have to use plural verb. ठीक है, अगर enemy बोलना है तो हम typically क्या बोलते हैं, enemy has surrendered, but it is a wrong usage. Okay, the enemy were forced to surrender, तो यहाँ पे आएगा were. किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं जिसके साथ आपकी कंट्री वॉर पे है तो. ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स regarding subject verb agreements. Now there will be a set of questions in front of you. Please take a look at them, solve, and pause the video if you wish to solve. I hope you have given a fair attempt to this particular set of questions. Let's discuss the first one. It is in 2000 when I met Catherine, my would-be wife. अब ये क्या है, meeting Catherine is in past, singular event, one point event, so it is simple past, and is does not resonate with simple past. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, it was in 2000. ठीक है, so that is the idea. Question 2, my dog is not in his kennel, he has ran away in the morning. My dog is not in his kennel, he has ran away in the morning. अभी यहाँ पे सिंपल एक ही ये है कि हम कह रहे हैं हमारा डॉग केनल में नहीं है बिकॉज ही रैन अवे इन द मॉर्निंग, बट दिस इज नॉट वन एक्शन फॉलोइंग अनदर एक्शन. ठीक है, जो हमने देखा था परफेक्ट टेंस में कि अगर दोनों एक्शंस के बीच में को रिलेशन है एंड वन इज हैपनिंग एंड देन इम्पैक्टिंग द अदर एक्शन इन सम मैनर, ओनली देन वी यूज परफेक्ट टेंस. यहाँ पे हैज रैन अवे उन्होंने लिखा हुआ है तो दैट मीन्स दे आर यूजिंग परफेक्ट टेंस. बट इज द परफेक्ट टेंस वारंटेड? नो. व्हाई? बिकॉज ही रैन अवे इन द मॉर्निंग, दैट्स व्हाई इज नॉट इन द कैनल. ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसका कैनल में ना होना इज बेसिकली एन अनदर एक्ट. ठीक है, ये कोई अनदर एक्शन नहीं है, इट इज जस्ट एन आउटकम ऑफ वॉट एवर एक्शन ऑलरेडी वॉज टेकन बाय द डॉग. तो क्या होने वाला है यहाँ पे, वी कैन नॉट यूज परफेक्ट टेंस हियर. If you want, you can go back and take a look at the rule. ठीक है, तो we cannot use perfect tense here. It should just be a simple past tense sentence. So he ran away in the morning. My dog is not in his kennel. He ran away in the morning. Third, Saina is a gifted painter who is displaying her talent on canvas for past 8 years. Saina is a gifted painter who is displaying. Now displaying ing form is continuous tense. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, पास्ट 8 years से. ओके, अब 8 years दिया हुआ है, राइट, बट 8 years यानी पास्ट से अभी तक कंटिन्यू हो रहा है ना, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग इन पास्ट एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेज. ओके, तो आपको कहना है कि तब से अब तक, एंड देयरफॉर साइना इज अ गिफ्टेड पेंटर हु हैज been displaying her talent on canvas for past 8 years. Perfect continuous कब होता है, some action started in past and it is continuing. Okay, so
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, आई कुड सी द बस हैड लेफ्ट जस्ट एज आई सॉ द बस स्टॉप। ठीक है, आई कुड सी द बस हैड लेफ्ट जस्ट एज आई सॉ द बस स्टॉप। तो यहाँ पे द सेंटेंस कैन बी बेटर रिस्ट्रक्चर्ड एज जस्ट एज आई सॉ द बस स्टॉप द बस हैड लेफ्ट। लेकिन अभी हमें ये ओरिजिनल सेंटेंस दिया हुआ है, तो रिस्ट्रक्चर आप कर सकते हैं इफ यू विश टू, लेकिन अगर हमको ओरिजिनल सेंटेंस को ये करना है तो आई कुड सी द बस हैड लेफ्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, बस का लीविंग इज वन एक्शन, ठीक है, एक्शन वन, and me seeing the bus stop is another action, action 2. So there is correlation between these two actions, therefore perfect tense is fine here. So as soon as I saw the bus stop, the bus had left. ठीक है, या as soon as I laid the eyes on the bus stop, the bus had left. तो इसका मतलब क्या है, you are implying that something ended या something happened just as soon some another action ended or was completed. So perfect tense is fine here. So there is no error in this sentence. I could see the bus had left just as I saw the bus stop. मतलब मैं अभी जस्ट मैंने बस स्टॉप देखा और तुरंत ही बस थोड़े ही देर पहले यू कैन से कि बस हैड लेफ्ट। फिफ्थ, वी हैव बीन नोइंग मिस राधिका सिंस 1997। सिंस के साथ टेक्निकली परफेक्ट टेंस इज अलाउड। ठीक है, परफेक्ट टेंस इज फाइन बट परफेक्ट टेंस के साथ आना चाहिए V3। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कब आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा व्हेन सम एक्शन इज ऑनगोइंग। ठीक है, तो नोइंग जो है ये वर्ड का यूजेज गलत है। क्यों? क्योंकि नोइंग इज टू नो समवन। तो अभी ऐसा नहीं है ना कि आप जान ही रहे हैं किसी को। इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हम उनको तब से जानते हैं, राइट? सो इट शुड बी नोन। सो व्हाट यू कैन से इज वी हैव नोन मिस राधिका सिंस 1997। हम तब से उनको जानते हैं। ठीक है, तो वी हैव नोन, this will be the most appropriate way of rewriting this sentence. We have known Miss Radhika since 1997. हम अभी भी जानते हैं, हम फ्यूचर में भी जानेंगे, लेकिन knowing with ing does not make sense here. Question 6. These toys have been belonging. इससे related rule भी है, ing फॉर्म में क्या नहीं कर सकते वो भी आप implement कर सकते हैं यहाँ पे। Next. These toys have been belonging to me since I was a child. Again यहाँ पे belonging हमने देखा था कि belonging is not a correct word to be using, and it actually like together with perfect tense it sounds strange. आपको कहना क्या है यहाँ पे कि ये जो खिलौने हैं these have been mine since I was a kid, ठीक है, since I was a child. तो यहाँ पे simple perfect tense will suffice, ठीक है, because you're talking about something from past, okay, and that is allowed in perfect tense. So present perfect tense is the best way. So these toys have belonged to me since I was a child. These toys have belonged to me since I was a child. या फिर अगर आपको एक और, there could be some people questioning this. So these toys belong to me since I was a child. ठीक है, तब से अभी तक इनकी ओनरशिप कभी चेंज नहीं हुई है। ठीक है, और उसको एम्फसाइज करने के लिए आप परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, it is high time the teachers have completed the syllabus and started revising it. Now this is a contentious one. ठीक है, this is called subjunctive case, जिसमें आप wishes, desires या ऐसी कोई situations के बारे में बात करते हैं जो आप चाहते हैं कि हो बट वो हो नहीं सकता है। ठीक है, I wish I were a queen. ठीक है, I wish I were a queen. तो ऐसे केसेस में यूजुअली प्लूरल नाउन्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस सेंटेंस में सब्जंक्टिव केस है कि नहीं है, मतलब इस केस में वर्ब प्लूरल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा डिबेट है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जंक्टिव केस की रिक्वायरमेंट है क्या। ठीक है, तो सब्जंक्टिव केस
यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें कहना है कि ये बहुत हाई टाइम है कि टीचर्स शुड हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एंड स्टार्टेड रिवाइजिंग इट। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस टाइप का सेंटेंस कहते हैं हाई टाइम वाला, कि जहाँ पे इट्स हाई टाइम का मतलब इट मस्ट हैव हैपेंड बाय नाउ एंड इनफैक्ट इट इज ऑलरेडी लेट। तो जब हम इस पर्टिकुलर टाइप के सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज यू आर एक्सप्रेसिंग अ डिजायर या अ विश कि अभी तक हो जाना चाहिए था, दैट इज योर विश, राइट। तो जब हम इस पर्टिकुलर टाइप के सब्जेक्टिव केस के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे हम परफेक्ट टेंस नहीं यूज करते, वहां पे हम सिर्फ पास्ट टेंस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ये ऑलरेडी हो जाना चाहिए था। ठीक है, सो दिस शुड हैव फिनिश्ड इन द पास्ट, ये कॉन्टेक्स्ट आता है, इसीलिए हम इसको पास्ट टेंस में डालते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू like write about this particular sentence, it is high time the teachers completed the syllabus and started revising it. That is the best solution for this one. So don't worry about subjunctive cases, we are going to discuss them in upcoming lectures, but remember this one. ठीक है, you are already saying it is late, ये हो जाना चाहिए था, and because you express it in that manner कि ये हो जाना चाहिए था already, इसलिए हम उसको past tense के context में लिखते हैं. So it is high time the teachers completed the syllabus and started revising it. This is the best way. 8. The baker and the cake decorator. The baker and cake decorator are set to be married in August. Now हमने अभी देखा था कि and आया, तो अगर एक ही द है, नाउन 1 है, नाउन 2 है एंड एक ही द है, तो हम इन दोनों को एक ही इंसान मानेंगे, जैसे हमने देखा था सीईओ एंड प्रेसिडेंट। ओके, अगर आपको कहना है कि ये दोनों लोग अलग अलग हैं, तो आप क्या कहोगे? द N1 एंड द N2। ठीक है, जब आप दो इंडिविजुअल द यूज करोगे तभी समझेगा कि आप दो एंटिटीज के बारे में बात कर रहे हो, अदरवाइज दे आर सिंगुलर। सो ऑब्वियसली इफ दे आर सेट टू बी मैरिड इन ऑगस्ट, then it means that we are talking about two individuals and there should be a the here, the baker and the cake decorator. So two people, one of them is a baker and another one of them is a cake decorator. To emphasize that they are two individuals, we have to use different articles for both of them. Okay, next, pizza and burger are my favorite meals. ठीक है, अब पिज्जा एंड बर्गर इज यूजुअली कंसिडर्ड वन मील। ठीक है, फास्ट फूड टाइप का। when they are talking about meal is typically only considered singular। ठीक है, तो जब हम कहेंगे कि पिज्जा एंड बर्गर आर माय फेवरेट मील्स, आप कहोगे पिज्जा एंड बर्गर इज माय फेवरेट मील। ठीक है, पिज्जा एंड बर्गर दोनों। ठीक है, अगर आपको कहना है कि मेरे दो अलग अलग फेवरेट मील्स है, तो आप कहोगे माय फेवरेट मील्स आर a pizza and a burger. Again, there has to be an article here then. Okay, to emphasize the difference, a pizza and a burger can be counted as my favorite meals. Okay, उसका मतलब क्या है कि एक मील आपको पिज्जा एंड एक मील आप बर्गर ऐसा कंसिडर कर रहे हो, लेकिन जब आपने ऐसा लिखा हुआ है, दैट इज इंडिकेटिंग जस्ट वन आइडिया, that idea could be by default like of say fast food or something. ठीक है, जैसे दाल एंड राइस था, तो दाल एंड राइस बेसिकली टॉक अबाउट वन डिश। यहाँ पे भले डिश अलग अलग है, लेकिन आइडिया एक है कि वो खाना एक मील के बारे में बात कर रहा है। तो पिज्जा एंड बर्गर इज माय फेवरेट मील। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज बर्गर एंड फ्राइज, पिज्जा और बर्गर, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है। अगर मैं कहूँ बर्गर एंड फ्राइज, क्योंकि टिपिकली यही है, बर्गर एंड फ्राइज ऐसे ही खाया जाता है। ठीक है, तो बर्गर एंड फ्राइज, तो आप कहोगे इज माय फेवरेट मील। जस्ट बिकॉज दिस आइडिया कुड बी लिटिल बिट स्ट्रेंज टू यू doesn't mean it's grammatically wrong. ठीक है, so मतलब it doesn't mean that you should not apply grammatical rules. You can get any number of contexts in the exam hall, so you don't have to think in that manner. Next, each of the students love to read poetry and plays. तो अब यहाँ पे what is the difference देखो। तो अब यहाँ पे क्या होता है, each of the students love to read poetry and plays. Now I have given you a rule, each and every का केस। ठीक है, तो यहाँ पे each
बॉय एंड गर्ल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था। तो अगर ईच के बाद सिंगुलर नाउन्स आए हैं दो विच आर जॉइंड बाय एंड, तो क्या करना है, हमें उनको सिंगुलर ही कंसिडर करना है, तो वर्ब हैज टू बी सिंगुलर। बट अब यहाँ पे सम पीपल कैन गेट कंफ्यूज कि स्टूडेंट्स राइट है क्या। स्टूडेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स में से हर एक, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वो आइडिया है कि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, उनमें से हर एक, राइट। अगर ऑफ द नहीं होता तो आप क्या बोलते, ईच स्टूडेंट लव्स टू रीड पोएट्री एंड प्लेस, ठीक है। अगर मैं कहूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मतलब उन स्टूडेंट्स में से हर एक। तो यहाँ पे ईच का जो यूजेज है, इट इज लाइक एवरी वन ऑफ एंड देन प्लूरल नाउन, इस टाइप से यहाँ पे उसको यूज किया गया है। ओके। अगर ऑफ द नहीं होता, क्योंकि ऑफ द तभी आएगा ना जब आप एक ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अगर आप ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे तो ऑफ द क्यों आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे प्लूरल नाउन है, दैट इज फाइन। एंड इस प्लूरल नाउन के साथ, भले ये प्लूरल नाउन है, हम क्या बोल रहे हैं, हर एक। तो लव हैज टू को रिलेट विथ व्हाट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स loves to read poetry and play, ठीक है। तो यहाँ पे you have to see कि whether you are basically managing the verb with subject. Subject is not students, subject is each of the students, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट्स में से हर एक, so every one of the students loves to read poetry and play, इस टाइप का कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। वैसे ही each of the students love to read poetry and plays, भले कितना भी करेक्ट लगे, love has to resonate with each, not with students. This is the common subject which is singular, and since it is singular, this verb which has to resonate with this should be singular, so it should be loves. Okay. Now this is the next set of questions. Please take a look at it and find out what's the error. You may pause the video here. So I hope that you have found out the answers. Let's discuss now. Number 11, the great collection of Sherlock's adventures still entertain children. Now what is the subject here? किस चीज के बारे में बात चल रही है? The great collection of Sherlock's adventures. आपको लगेगा ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ Sherlock's adventure. Collection singular. So verb क्या है? Entertain. What entertains? The collection of Sherlock's adventures entertains. Okay. So entertains is the right verb. क्यों? क्योंकि we have to make it singular. That's why. I hope you guys are understanding here, because see, identifying a subject is essential. If you are not able to understand कि exactly subject क्या है, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शर्लॉक के एडवेंचर नहीं एंटरटेन करते बच्चों को, कलेक्शन ऑफ शर्लॉक्स एडवेंचर एंटरटेन चिल्ड्रन, ठीक है। कलेक्शन है, सिंगुलर है, तो एंटरटेन गलत है, एंटरटेन्स होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर आर अ बंच ऑफ फ्लावर्स फॉर यू एट द रिसेप्शन, ठीक है। देयर आर अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अब बंच ऑफ फ्लावर्स, बंच इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है, तो आना चाहिए सबसे पहले। तो सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है, कंसिडर्ड सिंगुलर। अ बंच ऑफ समथिंग, ठीक है, अ बंच ऑफ समथिंग ये होता है। ओके, ये हम यूज कर सकते हैं ऐसे, देयर आर अ बंच ऑफ फ्लावर्स, बट ये इनफॉर्मल है। इफ यू आर लुकिंग एट फॉर्मल इंग्लिश, देन इट शुड बी देयर इज अ बंच ऑफ फ्लावर्स फॉर यू एट द रिसेप्शन। अगर आपको फ्लावर्स पे फोकस करना है तो डोंट यूज अ बंच, ठीक है। जैसे इफ यू वांट टू कीप आर कंसिस्टेंट, प्लूरल कंसिडर करना है, तो स्क्रैप दिस ऑफ, देयर आर फ्लावर्स फॉर यू at the reception. This is also the same sentence, but if you use a collective noun such as a bunch of something, you're saying a bunch.
ठीक है. So you can see there are some flowers for you at the reception to talk about plurality, or if you are talking about a bunch, then you have to make it singular. So there is a bunch of flowers for you at the reception. Here you are more like focused on the bunch, not on the flowers. Question 13. Not only Rama but her entire family are science enthusiasts. ठीक है. A family is a collective noun. ठीक है. And it is a very tricky thing to talk about. Okay. Not only Rama but her entire family are science enthusiasts. तो हमने क्या देखा था not only के केस में. देखो, let me show you that slide. So let's take a look at this rule. When not only but also is used to combine two subjects, the verb agrees with the subject close to it. ठीक है. अभी when we had discussed about nouns and pronouns in the previous class, we had seen that there are some collective nouns. ठीक है. Family is one of them. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर आप फैमिली को एज ए यूनिट देख रहे हो तो इट इज सिंगुलर, but it is also considered plural when you're talking about individuals. ठीक है. So my family is here is right and my family are here is also right. So अगर आप अपने फैमिली को पूरे एक यूनिट की तरह देख रहे हो, my entire family is here, तो entire बोल रहे हो तो पूरी, तो आप उसको एज अ होल देख रहे हो. ठीक है. तो आप my entire family is here is right, तो आप कह सकते हो कि my entire family is here. या फिर अगर आप कहोगे कि all my family are here, that is also fine. ऑड लगता है सुनने में, all my family are here. ठीक है. यहाँ पे आप ये इंक्लूड कर रहे हो, आपके कॉनोटेशन में बात करने में ये इंक्लूड हो रहा है कि आप इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हो. ठीक है. तो यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट ऑल द इंडिविजुअल्स बीइंग प्रेजेंट व्हेन यू आर सेइंग माय फैमिली, ऑल माय फैमिली आर हियर. या अगर आप ये भी कह रहे हो कि माय फैमिली आर हियर, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप फैमिली को एक यूनिट ना कंसिडर करके यू बेसिकली इंटेंशन आपका, यू हैव द इंटेंशन ऑफ स्पीकिंग ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इंडिविजुअली. भले आप वो एम्फसाइज नहीं कर रहे, लेकिन आपका देखने का पर्सपेक्टिव वो है. ठीक है. अब यहाँ पे फैमिली इज साइंस एंथुजियास्ट्स. ठीक है. ये भी रॉन्ग हो जाएगा अगर आप चेंज करते हो तो, लेकिन यहाँ पे जरूरत ही नहीं है चेंज करने की. नॉट ओनली रमा बट हर एंटायर फैमिली आर science enthusiasts. So if you're saying that, then the speaker's intention is to speak for every individual of that family. Okay. Next, 14. I had a car. Had I had a car, I would not need to take a cab during rains. This is again a subjunctive case. ठीक है. अगर मेरे पास कार होती तो, और यहाँ पे इन्होंने यूज किया है परफेक्ट पास्ट. पर आप जो कहना चाह रहे हो क्या है कि अगर अभी मेरे पास कार होती तो ये पास्ट में जाना नहीं चाहिए. ठीक है. Had I a car, I would not need to take a cab during the rains. ठीक है. इसको अगर आपको रिपेयर करना है प्रॉपरली ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट से, तो इट विल बी अ स्लाइटली like you'll have to make certain adjustments to the sentence. आप कह सकते हो if I had a car, I would not need to take a cab during the rains. ठीक है. या फिर had I had a car now, had I had a car. ठीक है. अगर आपको ये had यूज करना है तो आपको ये वाला had भी यूज करना पड़ेगा. And as I said, subjunctive cases can be a little bit tricky to understand, so don't worry about this. For now, just understand कि उनको कहना है कि अगर मेरे पास पहले से कार होती तो they are talking about perfect past here. ठीक है. अगर यहाँ पे मैं कहूँ if I had a car, because it is past perfect and subjunctive case, वहां पे had आएगा. और simplify करना है तो I wish I had a car so that I would not need to take the cab during the rains.
So preserving the meaning is more important. ठीक है? And if you don't understand this example right now, don't worry. There are several cases in subjective clauses. There are also some conditional types 1, 2, 3. So we are going to take a look at them. ठीक है? तो if you are not able to understand just right now, don't worry about it. The only idea here is whether you can see that there is a missing had, because अगर आप tense के context में देखो तो this had is conditional, it is putting a condition, and had I a car, I would not need to take a cab during the rains is not correct. Why? Because यहाँ पे condition तो आ गई लेकिन tense का mention नहीं है. Perfect tense जो पहले आना चाहिए आपके statement के उसका mention नहीं है, तो इसीलिए हमें एक perfect tense दिखाने वाला एक auxiliary verb डालना पड़ेगा. Had I had a car, I would not need to take a cab during the rains, because the first had is a condition. Okay, and यहाँ पे by default जो sentence में auxiliary verb आना चाहिए इस context में वो missing है, and that auxiliary verb should be of perfect tense type का. ठीक है, तो ये idea है. Had I had a car, I would not need to take a cab during rains. This is a slightly complicated sentence because of subjunctive as well as perfect tense. So if you don't understand it right now, it's fine, because the first bit of it has to be discussed yet. Okay, but some people have a natural knack of catching on these things. Okay, तो वही मुझे देखना है कि if some of you can naturally catch this, then that means that you are reading at a good level. Okay, and it also means that you are subconsciously able to understand the grammar that you are reading. Okay, whatever you are reading उसका एक subconscious आपके अंदर ग्रामर का एक acumen build हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, so there will be some examples in every class which are going to be more difficult than the rest of the question set. So these are put just to get a check whether we are doing really well, or whether we are still learning. Question 15. The minister and his secretary was angry when the locked door was opened for them. ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, and the minister and his secretary was angry. अब यहाँ पे दो नाउन्स के बारे में बात हो रही है. The minister and his secretary, दोनों लोग गुस्सा होंगे ना, यहाँ पे उनको वही कहना है. ठीक है, अदरवाइज वो उसके सेक्रेटरी को क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं. तो उनको कहना है कि both of these people were angry, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, were, because your subject is plural. अगर आपको मिनिस्टर वाला पुराना कोई एग्जांपल याद आ रहा होगा पहले जो इस क्लास में हमने देखा है, तो वहां पे द चीफ मिनिस्टर अलोंग विथ हर डॉटर्स, ये था एग्जांपल. ठीक है, सो दैट वाज अलोंग विथ हर, अकम्पनीड बाय हर, दैट काइंड ऑफ केस. सो डोंट कंफ्यूज इट विथ दिस वन. नेक्स्ट, यहाँ पे सिंपल है, एक नाउन दूसरा नाउन एंड जॉइन बाय एंड. ओके, नेक्स्ट. After a lot of trials and tribulations, India has emerged victorious in the football tournament. So, question 16. After a lot of trials and tribulations, India has emerged victorious in the football tournament. अब मैंने आपको रूल बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हैव आना चाहिए. यहाँ पे हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट एज सच नहीं है. ठीक है, इंडिया हैज इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फुटबॉल टूर्नामेंट. अब दे आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक फुटबॉल टूर्नामेंट, तो आप कह सकते हो कि इट शुड बी लाइक अबाउट द प्लेयर्स. बट इफ देयर कॉन्टेक्स्ट इज इंडियन टीम या इंडिया एज अ कंट्री, then has also works. Okay, such ambiguous statements most likely will not be given to you. Okay, but अगर स्पोर्ट्स के बारे में आता है तो टू बी ऑन सेफर साइड इट विल बी माय सजेशन दैट यू गो विद द रूल जहां पे आप प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हो. ओके,
तो वैसे दोनों सही है, लेकिन बिकॉज वी हैव अ स्पेसिफिक रूल दैट कैट और अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स यूजुअली टेस्ट, ठीक है, तो इसीलिए हैव विल बी अ बेटर चॉइस बिकॉज दैट इज अ रूल दैट इज क्वाइट फ्रीक्वेंटली टेस्टेड. तो अगर आप स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे वो प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं. अभी अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट भी, तो इफ यू विश टू कंसिडर ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस एज अ कॉन्टेक्स्ट फॉर प्लेयर्स, कि प्लेयर्स को बहुत ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस फेस करने पड़े, ओके, तो in that context have will be a better option, but without the context, as I said, it can be a little tricky. These kind of sentences, if you encounter them at all, you will find them as a part of some something like a clues test or some like paragraph based fill in the blank statements. तो ऊपर आपको कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, वहां पे आपको समझ में आएगा कि इंडिया एज अ टीम के बारे में बात हो रही है, इंडिया एज इंडिविजुअल प्लेयर्स, मतलब इंडिया के प्लेयर्स डिस्कस हो रहे हैं, या फिर इंडिया एज अ कंट्री दैट वन, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है. तो उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं. सिंस इट इज स्पोर्ट एंड यू डोंट हैव कॉन्टेक्स्ट बट यू जस्ट हैव रेड द रूल कि हैव होना चाहिए, तो आप इसको हैव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. 17. Not only my sisters but I too am in love with कार्नेटिक म्यूजिक. क्या प्रॉब्लम है इसमें? हमें पता है कि जब डिफरेंट प्लूरलिटीज वाली नाउन्स एंड प्रोनाउंस है, तो करना क्या है कि वर्ब के पास में वी हैव टू कीप प्लूरल वाला नाउन, ठीक है. सो वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ दीज टू, ठीक है. नॉट ओनली माई सिस्टर्स बट आई टू एम इन लव विद कार्नेटिक म्यूजिक. इससे बेटर है नॉट ओनली आई but my sisters too are in love with Carnatic music. ठीक है, Carnatic music है ना, the music that is typically like found in the southern part of India. ठीक है, southern states जो है उनमें जो म्यूजिक टिपिकली हमको सुनने मिलता है, उनको हम कहेंगे वहां का जो क्लासिकल म्यूजिक है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड कार्नाटिक म्यूजिक. सो what we are supposed to do as per the rule, we have to keep the subject with plural प्लूरल सिंगुलैरिटी हियर एंड सिंगुलर वाला जो है वो यहाँ पे जाएगा. सो वी हैव टू स्वैप. 18th. Neither the dogs nor the cat are interested in the food I cook. Exasperated Shivani sighed. Neither the dogs nor the cat are interested in the food I cook. अब neither nor में क्या होने वाला है? neither nor में हम यूजुअली दो इंडिविजुअल्स, दो एंटिटीज के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे डॉग्स प्लूरल है, यहाँ पे कैट सिंगुलर है. व्हाट इज द बेस्ट वे? अगेन स्वैप. neither the cat nor the dogs are interested, ठीक है, क्योंकि एक तो आप नॉर यूज कर रहे हो तो इट शुड बी सिंगुलर आइडियली, ठीक है. अगर आप सिंगुलर सिंगुलर ही नाउन यूज कर रहे हो, अगर आपका नाउन 1 एंड नाउन 2 बोथ आर सिंगुलर, देन इट शुड बी सिंगुलर, वर्ब शुड बी सिंगुलर, ठीक है, अगर ये दोनों सिंगुलर है तो. लेकिन अगर ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे दो रूल्स हम लोग साथ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है. तो फिर क्या हो रहा है? एंड नहीं है यहाँ पे, और है, नॉर है, ठीक है. नॉर है तो टेक्निकली एज आई सेड कि सिंगुलर होना चाहिए, बट you have different similarities for both of them, and as per the rule that we just discussed about, प्लूरल जो है वो वर्ब के पास आना चाहिए और उसी का फॉलो होना चाहिए. तो this will resonate well if you swap. So the final statement should be neither the cat nor the dogs are interested in the food I cook, ठीक है. neither the dogs nor the cat की बजाय that will be a better option, क्योंकि neither nor में as I said सिंगुलर होता है. अगर n2 सिंगुलर है तो n2 अगर प्लूरल है तो you have to follow the strict plurality as we discussed in the above statement, ठीक है. So that's all from me. We have tested quite a few rules here. Please practice a lot. If you don't have the basics clear, you will face a lot of problem in understanding this particular session. So for that, please make sure that you are reading up on the basics. Also, if you find it very difficult to tackle, please go to the nouns ka lecture. Okay.
and please make sure that you are thorough with whatever has been discussed there, because when we talk about subject verb agreement, इनबिल्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन्स इज अ पार्ट ऑफ इट. ठीक है, तो नाउन्स का एक उसमें ऑटोमेटिकली पार्ट है. कौन से नाउन को हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, कौन से नाउन को सिंगुलर कंसिडर करते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए. ओके, जैसे हमने सब्जेक्ट्स कैसे मतलब देखो यहाँ पे हमने सिर्फ नाउन्स के बारे में डिस्कस किया, अभी हम यहाँ पे मल्टीपल नाउन्स के बारे में बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. इन केस ऑफ नाउन्स वी ओनली डिस्कस्ड different types of nouns. यहाँ पे we are discussing about multiple nouns, so obviously difficulty level is a little bit higher. Okay, and for grammar every previous topic is going to be integrated in the next topic, because that is how the structure of grammar is. Okay, so we can't keep playing at a level which is comfortable for us, even though grammar can feel very tiring sometimes. So the best way to tackle this is, after the class please go through all the rules individually. ठीक है, हर एक रूल को आप अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड बाय वर्ड, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. हो सकता है आपको 2-3 बार भी पढ़ना पड़े, तो हमें वो करना पड़ेगा. ठीक है, और जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए. जितना ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलेगा अलग अलग क्वेश्चन का, उतना ज्यादा आपको सॉल्व करते आएगा बेटर. So that's all from me. I'll catch up with you in the next session. Till then, see you, bye bye, and keep practicing.